Today we are going to explain the component-based development in software engineering. Uh, if you look when we buy a laptop, so the manufacturer doesn't build each and everything from the scratch. Okay, we see that they source some proven and the tested components like the processor from one company. They use another component like the USB drives of the another company एंड और इसी तरह जो है स्क्रीन किसी दूसरी कंपनी का यूज़ करते हैं तो इसके बाद इसको रीयूज़ करके जो प्रूवन टेस्टेड कंपोनेंट्स है उसको असेंबल करते हैं और फिर उसको जो है वो डिलीवर करते हैं सो जस्ट लाइक दिस असेंबलिंग ऑफ द लैपटॉप we also have to apply the same principle to software engineering as well. So software engineering में हम हर एक सॉफ्टवेयर को फ्रॉम द स्क्रैच जो है वो बिल्डअप नहीं करते. ठीक है, हम कुछ कंपोनेंट जो है वो ऑलरेडी बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं तो उन कंपोनेंट्स को रीयूज करते हैं. ठीक है, इसके अलावा फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, देन वी असेंबल दैट कंपोनेंट्स एंड फाइनली वी डिलीवर एंड डिप्लॉय दोस कंपोनेंट्स. So component based development is focusing on the faster development by assembling the proven and the reusable components जो already we have built there. So look at the proper definition of component based development. So component based development is a software development approach where a system is built by assembling the pre-existing reusable software components rather than developing the entire system from the scratch. It means that we don't have to reinvent the wheel. If we already have some components or some modules already built, so we can use that. So what is now a component? A component is a self-contained software module that performs a specific function and can be integrated with other components to build a complete system. जिस तरह हम देखते हैं, for example, if you look at the common examples, authentication module या libraries है, then we have the database connectors, the payment gateways, and the UI components. If we have developed all these components for one client, okay, so then we can reuse these components which are already tested, proven. So we have to integrate all these for another software and then we can deliver it very easily. Now, what is the main idea? The key idea of the CBD is to stop reinventing the wheel. If a proven secure component already exists for what you need, then you have to use it. Just like you see, we have to develop an e-commerce website built with the reusable components. Already you know what are the major components of the e-commerce. ठीक है, तो we have the login component जिसमें यूज़र ऑथेंटिकेशन एंड सेशन मैनेजमेंट है. फिर उसके बाद शॉपिंग कार्ट जो कि देयर टू साइड्स ऑफ दैट, वन द एडमिन साइड और दूसरा जो है यूज़र या क्लाइंट साइड है. तो फर्स्ट वी हैव टू ऐड लाइक to add the products, remove and manage the items of the products for purchase. Third, we have the payment processing. So we need the secure transactions through Stripe or PayPal or all these transaction methods. Then we have the email notification. You see, when we place an order, so we get a confirmation email from the e-commerce website and all the transactional emails as well. तो इसका रिजल्ट क्या होगा? So we focus on the developers assemble the site, not build it from the scratch. इसका मतलब है कि ऑलरेडी जो है कुछ चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, मतलब प्री एग्जिस्टिंग है, यूज्ड है, टेस्टेड है, लाइक द लॉगिन कंपोनेंट और द पेमेंट प्रोसेसिंग. ठीक है, या ईमेल नोटिफिकेशन का मॉड्यूल है. सो इसको हम सिर्फ यूज करके रीयूज करके किसी दूसरे क्लाइंट के लिए एक सॉफ्टवेयर जो है विद इन ड्यू टाइम उसको हम डिलीवर कर सकते हैं. नाउ लेट्स लुक एट द 6 phases जो कि मैन पिलर्स है, 6 phases of the component based development. The first one is requirement analysis. You know, in each and every software development, the first phase is requirement analysis. If the requirements are clear, that is not vague, that are not ambiguous, it means that is the base. On the basis of this, then you can go onward for the component search or the design like that. So यहाँ पे जो है हम मेन फोकस जो है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे है. सो आइडेंटिफाई द सिस्टम नीड्स, डिटरमिन विच कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है, तो हम रिक्वायरमेंट्स को जो है वो एक्सप्लोर करते हैं,
अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके बाद हम कंपोनेंट्स को सर्च करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स देन वी सर्च फॉर द कंपोनेंट्स। सो सर्च द डिफरेंट रिपोजिटरीज, द ओपन सोर्स एंड द कमर्शियल लाइब्रेरीज। ठीक है, गिटहब पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पड़े होते हैं जो कि ओपन सोर्स है। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को देखिए, ऑलरेडी यू हैव डेवलप द प्रोजेक्ट्स फॉर दैट, तो आप अपनी रिपोजिटरी को देखें कि कौन से कंपोनेंट्स जो है ऑलरेडी यू हैव बिल्ट दैट। देन वी हैव द कंपोनेंट एवेल्युएशन, सो वी असेस द कंपैटिबिलिटी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी। सिर्फ ये नहीं है कि हम जो भी कंपोनेंट्स है सर्च करते हैं तो वो कंपैटिबल हो गए। सो वी असेस द कंपैटिबिलिटी, जो ऑलरेडी जितने भी मॉड्यूल्स हैं, कंपोनेंट्स है, तो हम उसकी कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं। फिर उसकी परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी को जो हम देखते हैं। देन वी हैव द कंपोनेंट एडाप्टेशन, सो मॉडिफाई और कस्टमाइज द कंपोनेंट्स टू फिट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो कंपोनेंट हम रीयूज़ करते हैं बिल्कुल एज इट इज़ हम यूज़ करें, कुछ कस्टमाइजेशन में इसमें होनी चाहिए। लाइक इफ़ यू हैव ऑलरेडी डेवलप वन वेबसाइट फॉर द ई कॉमर्स, ठीक है, एक ई कॉमर्स साइट जो है आप बना चुके हैं, तो दूसरे लेट्स सपोज इफ योर क्लाइंट इज फ्रॉम अनदर कंपनी, तो उसमें अ लिटिल बिट जो है मॉडिफिकेशन या कस्टमाइजेशन यू नीड टू डू दैट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स। Then we have the component integration. So we combine the components through APIs, ठीक है, the middleware or the frameworks। जो भी हम framework use कर रहे हैं, let's suppose अगर हम Visual Studio को use कर रहे हैं या Odoo framework हम use कर रहे हैं, तो उसके basis पे हम जो है components को integrate करते हैं। And then finally we test the system because we have to verify all the components whether they work together and produce the required results or not. If we look at the architecture of the CBT, so we have three layers of that. The first one is component repository, second the component interface, and the third integration framework. What we do in the component repository, so we centralize the storage of reusable version components available for selection across multiple projects। ठीक है, तो हमारे पास जो है एक सेंट्रलाइज्ड लाइब्रेरी है या रिपोजिटरी है जिसमें हमारे पास जितने भी रीयूजेबल वर्जन्स ऑफ द कंपोनेंट्स है, तो वहाँ पे हम उसको सेलेक्ट भी करते हैं, वहाँ इसको सर्च भी करते हैं। देन द कंपोनेंट इंटरफेस, we define the contract, input, outputs and protocols for how components communicate and we keep the components loosely coupled। ठीक है, इसका मतलब है कि जितनी भी कंपोनेंट्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू असेस कि वो कंपोनेंट्स जो है इनपुट क्या ले रहे हैं, वो कौन से प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं, और आउटपुट हमें क्या दे रहे हैं। तो एंड हाउ दीज कंपोनेंट्स जो है किस तरह वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब है कि definitely one component is dependent on another component and another, so we need to assess the dependencies as well। The third, we have the integration framework, because all the modules you are going to combine, then you have to integrate that, and after integration you have to do the testing as well। So the infrastructure that combines the components into a working system through APIs, middleware and the framework। So what we do, we are focusing on the repository, then we go to the interfaces, and then we combine it in a particular framework, and finally हमारे पास क्या आ जाता है, एक working system जो है हम deliver करते हैं और इसके बाद वो deploy करते हैं। Now looking at the 5 major advantages of the CBD, that is the component based development, you can see the first one is the faster development। Okay, because you are not going to reinvent the wheel, you are not going to develop each and everything from the scratch। तो यहाँ पे जो है हमारा क्योंकि ऑलरेडी टेस्टेड कंपोनेंट्स को जो है या प्रूवन टेस्टेड कंपोनेंट्स को हम रीयूज करते हैं, तो दैट इज टुवर्ड्स द फास्टर डेवलपमेंट। So reusing the proven components reduces the time to build and deliver the software significantly। Then we have the cost reduction, because already we are not utilizing the efforts। अगर हम efforts को utilize नहीं कर रहे तो it means our expenses are commonly reduced। तो cost reduction भी है, फिर high reliability भी है। high reliability in the sense कि already जो components जो है आप deliver कर चुके हैं, तो वो component जो है किसी organization की use में है, तो it means already these components are tested। ठीक है, तो like the way it provides the high reliability। The fourth one, the easy maintenance, so we replace or upgrade the individual components without rebuilding the entire system। Maintenance भी
बिकॉज कंपोनेंट वाइज हम इसको असेंबल करते हैं, तो एक कंपोनेंट को वेरीफाई, टेस्ट और वैलिडेट करके दूसरे कंपोनेंट्स के साथ हम जो है वो इंटीग्रेट करते हैं, तो उसकी मेंटेनेंस जो है वो भी easy है. Then we have to look for the improved quality as well, because the CBD provides the improved quality. So you know that well-tested components increase the overall system stability and reduce the failures. Okay, it means that we are already using the proven testing, tested modules, the components to quality tested components जो है, it will increase the quality as well. So it means that the CVD reduces time to market while increasing the software reliability. Now, looking at the disadvantages of the CBD, we have some compatibility issues, then the integration complexity, then we also have the security risks, and also we have the limited customization as well. जो भी हम मॉड्यूल्स या कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर मॉड्यूल जो है वो दूसरे मॉड्यूल के साथ या कंपोनेंट के साथ उसकी कंपेटिबिलिटी होगी. फिर इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्सिटी भी है. We are combining many components from different sources which create a complex dependency graph difficult to debug. इसका मतलब है कि जो कंपोनेंट्स जो है हम रीयूज करते हैं, तो ऑलरेडी दैट आर ओपन सोर्स, और उसकी इंटीग्रेशन, उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है, वी डोंट नो अबाउट द एल्गोरिथम्स बिहाइंड दैट, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो है वो डेवलप हो चुके हैं या किन प्रोटोकॉल्स को जो है वो फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल. फिर सिक्योरिटी रिस्क भी है. फॉर एग्जांपल, इफ you have downloaded a particular component from another source, so you don't know about the holes in that, what are the weaknesses or the holes in that, so it provides a security risk. Or fourth one is limited customization. Limited customization means कि already किसी दूसरे बंदे का जो है या आप मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, तो उसमें आप जो है, लेट्स सपोज इट्स कोड इज इनक्रिप्टेड या वो अवेलेबल नहीं है, तो आप या कस्टमाइजेशन जो है इतना वो फ्लेक्सिबल इसमें नहीं है, तो दैट इज द डिसएडवांटेज कि आप जो है उसमें कस्टमाइजेशन फिर आसानी के साथ नहीं कर सकते. इफ यू कंपेयर द सीबीडी विद द ट्रेडिशनल डेवलपमेंट, ठीक है, तो हमारे पास ट्रेडिशनल डेवलपमेंट है और दूसरा जो है सीबीडी है, and we will look at the real world, the CBD. So if you look at the criteria of the code origin, so in traditional we see we have to reinvent the wheel and to build each and everything from the scratch. और CBD में हम reusable components को use करते हैं, just like in the React components. फिर डेवलपमेंट स्पीड को अगर हम देखें, तो ट्रेडिशनल में ये स्लोअर है, यहाँ पे फास्टर है, इसलिए कि हम ऑलरेडी टेस्टेड कंपोनेंट्स को जो है वो यूज करते हैं. और इसका एग्जांपल वी हैव द जावा बीन्स. कॉस्ट के लिहाज से अगर हम देखें, तो ट्रेडिशनल कॉस्ट ज्यादा है क्योंकि वी आर बिल्डिंग ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच, और यहाँ पे सीबीडी में जो है वो कॉस्ट लोअर है. फिर अगर कोड रीयूज में देखें, तो ट्रेडिशनल में हम बहुत ही कम कोड को जो है रीयूज करते हैं, और यहाँ पे सीबीडी में we reuse the code very highly. So अगर if you look at the house analogy, traditional अगर हम देखें, तो we build अपने जो है डोर्स को बिल्ड करते हैं, हाउस के डोर्स को, विंडोज को, या वायरिंग, सब कुछ जो है हम अगर फ्रॉम द स्क्रैच बिल्ड करना चाहते हैं, तो ये एक है. अगर इस तरह भी पॉसिबल है कि हम जो है मार्केट से जो है ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू और रिक्वायरमेंट साइज जो है वह हम सारी चीज़ें, लेट सपोज डोर्स और विंडोज़ जो है किसी और दूसरे मतलब ऑलरेडी जो है अवेलेबल है मार्केट में, तो इसका मतलब है कि हमारा टाइम जो है वो बचत होगा और हम रेडीमेड चीज़ों को यहाँ पे ले आके आसानी के साथ फिट कर सकते हैं, और हमारे एफर्ट्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे. नाउ व्हेन वी शुड यूज द सीबीडी और एंड व्हेन वी शुड हैव टू अवॉइड. तो अगर हमारे पास इफ वी लुक एट द स्पीड ऑफ द डिलीवरी इज प्रायोरिटी, ठीक है, अगर इफ वी नीड द सॉफ्टवेयर टू बिल्ड इन लेट्स सपोज इन 1 month, तो हम सीबीडी को फॉलो करते हैं. इफ वी हैव द मैच्योर और द टेस्टेड कंपोनेंट्स एग्जिस्ट, देन वी हैव द बजट, इफ द बजट इज लिमिटेड, एंड इफ द बिल्डिंग द लार्ज स्केल सिस्टम्स, इफ वी आर गोइंग टू बिल्ड द लार्ज स्केल सिस्टम्स, और उसके बाद जो है लॉन्ग टर्म मेंटेबिलिटी इज रिक्वायर्ड. और दूसरा जो है अगर कॉलम को हम देखें, तो रिक्वायरमेंट्स अगर बहुत ज़्यादा यूनिक है, तो वहाँ पे सीबीडी कंपोनेंट्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, डेफिनेटली यू हैव टू री इन्वेंट द व्हील और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच.
फिर अगर सिस्टम नीड्स द फुल कोड ट्रांसपेरेंसी और कंट्रोल, एंड द थर्ड, अगर हमारे हमारे टीम जो है वो इंटीग्रेशन उनकी एक्सपीरियंसेस जो है इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हम सीबीडी को फॉलो नहीं कर सकते। एंड देन ऑल्सो वी हैव टू लुक एट द सिक्योरिटी पॉलिसीज रिक्वायर्स द फुल कोड ऑडिट, क्योंकि हम कोड ऑडिट करते हैं तो अगर कोड अवेलेबल नहीं है किसी मॉड्यूल का, किसी कंपोनेंट का, उस बेसिस पे हम जो है सीबीडी जो है वो हम फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, so these are the key takeaways of the CBD. You can see the CBD builds the software by assembling reusable pre-built components, not from the scratch. Mm, we have the 6 phases: requirement analysis, search, evaluate, adopt, integrate, and then we test. If we look at the architecture, so we have the component repository, component interface, integration framework. If we look at the advantages, so we discussed already, that is providing a faster delivery, lower cost, high reliability, easy to maintain, and it provides the better quality. Now, coming to the disadvantages we have discussed, so compatibility issues we have, integration complexity, security risk, and we have the limited customization in case of the CBD. That is used in the React, JavaBeans.NET. So CBD powers most modern software development today. So what is the main theme of that? So don't build what you can assemble, and don't assemble what you can reuse. Okay, so that was all about the component based development. In the next lecture, uh, we will discuss the incremental model. So see you there. Thank you.